there are three types. One is general, second is based on special. क्या हुआ? पॉलिटी में ही है ये. हाँ, अब आईआर ही पहले खत्म करेंगे. ठीक है, पॉलिटी उधर तब तक प्रीटी के टाइम तक याद भी रहेगा तुम लोगों. फिर आईआर वरना डेप्थ में नहीं हो पाता है. तुम लोगों ने अलग कॉपी बनाई है. अच्छा, आराम से बस यहाँ लिख लो, फोटोकॉपी करके उसमें स्टेपल कर लेना. अब स्पेशल एग्रीमेंट अलग कॉपी बनाई, बहुत अच्छा काम किया, अलग ही रखना है. ठीक है, लेकिन सोचना चाहिए कि अचानक बीच में वो टॉपिक कैसे खत्म होगा. एंड व्हेन समबडी राइट्स मेल तो उनको इतना पता है जीएस पेपर 2. ठीक है, ट्रीटी बेस्ड. तो ट्रीटी बेस्ड का एग्जाम्पल वी हैव सीन यस्टरडे, कुलभूषण जाधव केस. It is based on Vienna Convention and Pakistan could not deny because both are signatories. But Pakistan is trying to make change in its law and excluding the national security concerns. And what are the complexities in the case? The biggest obstacle is 2008 agreement, where we are trying to interpret in such a way that ICJ does not take that agreement, considering we are playing with the words in the treaty article 73 that there can be a bilateral agreement which can amplify but which cannot reduce the impact of it. And the other things is that we are focusing on some of the previous judgments. जैसे अवीना case is the most important case in this particular aspect, and our objective is if we can prove that person was not present in Pakistan, then it is best for us. So, but this requires cooperation from Iran. This much we have done. Now we have to understand compulsory jurisdiction otherwise also. Okay, what is compulsory jurisdiction and whether India has joined this compulsory jurisdiction or not. And this compulsory jurisdiction clause will be required to understand Saurabh Kalia's case. Fine. तो first लिखो, और भी होगा, 3 है, 1 अब लिखो कंपल्सरी, कहना फर्स्ट वाली. फर्स्ट सेकंड लिखो. सो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन. फाइन. Compulsory jurisdiction, only this I explained. It is not required. This you have to understand, compulsory jurisdiction. Likho, right? Right, most of the states have accepted the compulsory jurisdiction of ICJ right. India and Pakistan have also accepted it. Full stop. Next लिखो.
यानी कि कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन का अगर केस भी है तो तभी कर सकते हैं जब पाकिस्तान ऑल्सो एक्सेप्ट दैट कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन। तो दोनों ने एक्सेप्ट किया है तो ये अच्छी चीज है, ठीक है। बट हमारा जो सबमिशन है उसमें वी एक्सक्लूड द कंट्रीज विच आर कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो इसलिए पाकिस्तान का जो केस है वो अंडर कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन नहीं आ पाएगा until and unless Pakistan does not agree in Saurabh Kalia's case, which they will not agree. Fine. So we will have to resort to other remedy. Pardon? General वाला मतलब ये ट्रीटी में है कंपल्सी। पहले तुम लिखो कंपल्सरी, फिर अभी बताते हैं कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन। अब लिखो इंडिया हैज एक्सक्लूडेड compulsory jurisdiction from following situations या compulsory jurisdiction in following situations। अब पहले सुनो, suppose there is some dispute which we know it will happen. So two countries have agreed that in future this dispute we will solve by this particular way. It can be bilateral, it can be arbitration. So if India has agreement on this, then compulsory jurisdiction will not apply and country will have to resort to that agreement। ठीक है, समझ में आया? लिखो राइट पॉइंट नंबर 1, इन केस parties have signed an agreement over the specific method for the specific dispute, for the specific dispute। तो whether now or in future, then it will not come under compulsory jurisdiction। Second लिखो, right, with respect to the dispute with the country which is a member of Commonwealth at a particular time, या at the time of declaration by India। Declaration by India मतलब when India is submitting itself to the compulsory jurisdiction। तो suppose Pakistan was या is then and now it is not, then also it will not be। Have you understood this? If country had been a Commonwealth country at the time of the submission, fine। अब ये जो पहला वाला क्लॉज है, जैसे कश्मीर इशू है, शिमला एग्रीमेंट बायलैटरली हम रिजॉल्व करेंगे, बट पाकिस्तान के केस में नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड वाला क्लॉज लग जाएगा, नॉट विद रेस्पेक्ट टू अ कॉमनवेल्थ कंट्री। वाई एक्सक्लूडेड, हमने किसको कहां से एक्सक्लूड किया है? कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे से, ठीक है। अब यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स। We don't want to involve ICJ because our experience in Kashmir issue with UN Security Council has been bad, okay? But we also want to project ourselves as a responsible member of international community,
committed for growth of international law. ठीक है, तो we accepted or presented ourselves to the with the compulsory jurisdiction, but we don't want jurisdiction. ठीक है, तो क्या गेम है? अब हमारे डिस्प्यूट होंगे किससे? कॉमनवेल्थ या अपने नेबर से। नेबर्स पर सब कॉमनवेल्थ ही वाले हैं, श्रीलंका हो, तो हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया कि हमें जरूरत पड़ेगी नहीं है, मतलब बहती गंगा में हाथ धो लिया कि लोगों को लगेगी कि वी आर रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, बट we will not be facing a situation where we will have to go to ICJ. But now the situation has come where we ourselves have to go. So we need a rethinking on the way we look at international institutions. अभी समझ में आया? तुमने पूछा था क्वेश्चन, आ गया तुम्हें? नहीं ले जा सकते थे पाकिस्तान को, आईसीजे में नहीं ले जा सकते थे क्योंकि यहाँ से हमने उसे एक्सक्लूड कर रखा है। लेकिन हम क्यों ले जा पा रहे हैं? कॉमनवेल्थ नेशन, क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि वियना कन्वेंशन ऑप्शनल प्रोटोकॉल ये कहता है कि ऑटोमेटिकली यू विल हैव टू सबमिट द डिस्प्यूट। अभी हो गया समझ? क्या चीज साइन किया? ये वाली, क्योंकि हमको पता था ना कि काउंसलर्स या पाकिस्तान क्या करेगा, इंडियन स्पाइस, एवरी कंट्री विल बी हैविंग द स्पाइस, तो हमको पता था ना कि आवर पीपल इन केस दे आर डिटेन्ड बाय पाकिस्तान वी विल बी रिक्वायरिंग दिस, द काउंसलर एक्सेस, तो वी साइन दिस। फाइन। अब नाउ इट इज क्लियर, वियना कन्वेंशन। अब नेक्स्ट कंपलसरी हो गया, नेक्स्ट लिखो, राइट। राइट, एनी डिस्प्यूट which is essentially within the jurisdiction of the Republic of India, तो अब इसका मतलब है एनी डिस्प्यूट ऑन द टेरिटरी विच इज अंडर आवर जुरिस्डिक्शन, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, ठीक है, तो देयर ऑल्सो वी डू नॉट एक्सेप्ट द कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन। तो फ्रॉम आवर साइड इफ कश्मीर, Pakistan raises a issue of Kashmir, then until unless we don't agree, they cannot, ठीक है। तो if its dispute is with respect to anything happening in any territory which is under our jurisdiction, there also we have not, तो पता नहीं किया क्यों है, सारी जितनी भी possible dispute है हमने हटा के रखी है, ठीक है। अब next लिखो, if it is a question related to the military action performed by Indian armed forces, यहाँ पे नीचे लिखो when, when they are fulfilling any obligation as per directed by UN Security Council, as per directed by UN Security Council, कोई UN वर्क करते समय देन हमारे फोर्सेस के अगेंस्ट कोई केस आता है तो वी हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस। नेक्स्ट,
Now with any country, पहले सुनो फिर लिखो, ठीक है? जैसे इंडिया है, and let us say any other country A. So if that country India will be under the compulsory jurisdiction अगर both have accepted the compulsory jurisdiction, ठीक है? But not if this country has submitted to the compulsory jurisdiction just before 12 months of bringing a case against India. It means you are accepting a compulsory jurisdiction with this intention only. So we are smart enough. Fine. So this dispute also we have excluded. समझ में आ गया? लिखो right. Right. Dispute with any country which has accepted the compulsory jurisdiction of ICJ just 12 months prior. Okay. Next लिखो dispute with any government with which comma on the date of application to ICJ comma Government of India has no diplomatic relations next in case of multilateral agreement only when all parties in the dispute have agreed to compulsory jurisdiction. Next, no compulsory jurisdiction in territorial disputes. Next, no compulsory jurisdiction with respect to the disputes with non-sovereign states or territories. Next, no compulsory jurisdiction with respect to the disputes prior to the date of declaration of India's submission. Prior to the date of declaration, ठीक है, और India, right, India has submitted
itself to the compulsory jurisdiction for the first time in 1956, then modified it in 1959, and again in 1974. 1974 फाइनली ये है. ठीक है, तो दिस इज सम टाइम यू कैन गेट अ शॉर्ट नोट on the compulsory jurisdiction of of India, ICJ and India's submissions. Fine. So can there be a compulsory jurisdiction, or can there be a compulsory jurisdiction of ICJ in case of Kashmir dispute between India and Pakistan? No. बहुत सारा रीज़न बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन का है, फिर शिमला एग्रीमेंट से उसको डिसाइड करा है, फिर कॉमनवेल्थ कंट्री है. बट इफ बोथ वॉल्यूंटरली वांट दे कैन टेक द डिस्प्यूट. यस, वॉल्यूंटरली दे कैन टेक द डिस्प्यूट. अब ये क्लियर हो गया कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन. नाउ लेट अस सी केस ऑफ सौरभ कालिया. Captain Saurabh Kalia. So what is the issue? Issue is violation of the principles of war in war. Violation of the, हाँ लिखो इसका इशू क्या है. Violation of the principles of war in war. ठीक है, तो basically right, he was the first person to detect the Kargil misadventure. Right, right. He and his company, yeah, his people जो भी थे, were detained by Pakistani army, comma, violated the principles of Geneva Convention related to prisoners of war. Next, brutally mutilated the organs. Mutilated the organs. तो मतलब worst possible violence they could have shown, they have shown. Taken out the eyes, private parts, cut, everything that was possible, burns with the cigarette, so many things. So mutilated, like worst form of mutilation. So it becomes one of the worst form of human rights violation. Now, what courses are available, right? What courses are available for India? What courses are available for India to deal with the case?
because his parents and there has been a public opinion, so government thought, but still it's a complicated thing. What courses which are available? Fine. So first course is under Geneva Convention. Related to Geneva Convention related to the prisoners of war. ये है 1949, राइट. जेनेवा कन्वेंशन के साथ साथ लिखो एंड इट्स प्रोटोकॉल. जेनेवा कन्वेंशन एंड इट्स प्रोटोकॉल. ठीक है, राइट. Both India and Pakistan are signatory. Right. As per Article 13, right, prisoners of war will be treated humanely, comma, without endangering life and health. Full stop. No violence, insults or reprisals. No violent insult and reprisals. लिखो, right. Right. India signed it in 1950. India signed it in 1950 and Pakistan in 51. The incident took place in 1999. ठीक है, अब लिखो what is the technicality. Geneva Convention applies in the state of war, during the war, but Kargil is not recognized by Pakistan as a war, and they say that it was an internal rebellion or whatever, they were not our people. So how will you apply? You will have to prove that it is a war, and then international community has to accept, and it is not necessary that you will be able to prove it. Fine. Likho, right. Right. It applies only in case of war. Right. Kargil is not recognized as a war. Comma. Pakistan denies any involvement अब सेकेंड केस क्या है, सेकेंड रूट क्या है? सेकेंड रूट इज ICJ. देखो, राइट,
The second route is ICJ, right? Not available because Pakistan is a Commonwealth country. Third, ICC, International Criminal Court. Up here, right? Neither India nor Pakistan is a member of ICC. ठीक है? Next, UN Human Rights Council. UN Human Rights Council, right? This may be a possible course. ठीक है? Next, voluntary jurisdiction of ICJ. That is with the consent of Pakistan. ऐसा हो सकता है पाकिस्तान के साथ, हो सकता है वो एग्री कर भी जाए, ठीक है? क्योंकि फिर क्या होगा, फिर पाकिस्तान कोई केस बनाएगा और हम लोग को एग्री करना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान बोलेगा देखो हम लोग तो एग्री कर गए, ये लोग नहीं करते, ठीक है? और सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान बोलेगा कश्मीर इशू को आप आईसीजे में लाएं, तो पाकिस्तान क्या है, इंटरनेशनलाइज करना चाहता है और इंडिया शिमला एग्रीमेंट तक स्टिक रखना चाहता है बायलैटरल, ठीक है? तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। मान लो वॉल्यूंट्री कहा जाए और वो लोग एग्री भी हो गए, तो पाकिस्तान एक के लिए एक एक्सक्यूज होगा दैट we have shown this change, you should also agree that we can use a third party mediation and we don't want to take the risk on Kashmir, ठीक है? देखो, right, even when Pakistan agrees, comma, India is apprehensive that Pakistan may expect India to take the Kashmir issue to ICJ or any other international platform or for third party mediation. अब ICJ में all permanent members have their judges, so it is like you are giving an opportunity to China, forget Pakistan, ठीक है, to internationalize, and we are very much sure that the verdict will not be in our favor in Kashmir, because international community doesn't want peace in Kashmir. They only want disturbance in Kashmir, which allows them the reason to intervene in Kashmir or in Afghanistan or on this particular
region. Okay, so options are less. What was a face, because there has been a pressure, so face saving thing what government has done, government has sought a permission from Supreme Court. Can we approach when we are under the bilateral agreement? So the matter remains as it is, and these are the complications. So filhal it doesn't appear, so long these countries relations do not change, and even then it changed, nobody is trying to blame its armed forces. It's very difficult for the countries to do so. So filhal to I don't think any justice is possible. Fine. So what happens? Is there any justice to Captain Saurabh Kalia? Not possible. So you should remember shaheedon ki chitaon par. You remember? Mele lagenge bas. Justice not possible, because the lives can be sacrificed for the broader national interest. Fine, समझ गए? Yeah. नहीं, ऐसा नहीं है. ICC में, if India is a member of ICC and Pakistan is not a member, then also we can bring the case. And what will happen if India will become member, Pakistan will also become member. So Pakistan will daily bring the case about the, with respect to the violation of human rights in Kashmir. So we cannot do so. अब एक दो सोल्जर के चक्कर में सरकार इतने सारे रिस्क नहीं लेगी. Of course, it is always there is politics and power and interest. International community is the people who are sitting there. They are not accountable to us. They are working for promotion of their interest. So international politics, justice is not an issue. It's all about power and your ability to influence others. तो justice norm ही नहीं है international politics में. Justice की बातें only weak करते हैं. Strong never go for that. So you have to understand that there is no point strengthening the international law. फिर अब इंडिया के पास कोई रूट ही नहीं बचता. Central government will recommend the name of the judge, but you need 9 out of 15 votes. 9 में मान लो अभी तो ब्रिटेन नहीं है, 5 तो ब्रिटेन ही था, तो ब्रिटेन तो यूएस के साथ ही रहेगा, यूएस पाकिस्तान के साथ रहेगा, चाइना पाकिस्तान के साथ रहेगा, तो अब रशिया भी उन्हीं के साथ है, तो फ्रांस के अकेला फ्रांस भी दे देगा साथ ही. No, even if it is there, then the majority you will not be, you cannot trust na them. Fine, not possible. Ratifying treaty means you ratify with the parliament. Parliament ratify करता है, जिससे it becomes a law, and executive cannot change at its will, and it shows that there is a commitment of international community. Sorry, commitment of the people. ठीक है. War कैसे? न्यूक्लियर वॉर होगी फिर. नहीं, we can say, but others should accept. And the war happened inside Kashmir, and Pakistan doesn't say that it had intervened. Okay, so this is not being treated as a war. हाँ तो करो ना, लड़ाई जाके करो, फाइट करो, मतलब आईसीजे में करो. कहाँ करोगे? Where will you say that it is a war? And those who are sitting there, are they honest to accept? So countries will accept, not accept, all depends on bargaining.
It all depends on, you have to make a deal. In return किसको क्या मिल रहा है वो important है. तो उस जज को तुम क्या दे रहे हो वो important है, या उस कंट्री को तुम क्या दे रहे हो. It's all about deal. Yes. That is a bargaining techniques that they will keep on doing all these things because there is an opposition in USA that USA has financed a war and in which so many US soldiers have also lost their lives, and Pakistan is taking money and doing what China is saying. So it is never a one-to-one game. There are multiple dimensions. They have their own reason to reduce. Okay, they are reducing but they are not eliminating. And if Pakistan come to their terms, they will be in a position to increase it. Fine, you have understood this? So that was all in ICJ. So now associated with ICJ is, or one more short note you write on, Permanent Court of Arbitration. और ये जो है जेनेवा प्रोटोकॉल वो यूएन के अंडर में नहीं है, that is separate from UN. Now Permanent Court of Arbitration. This is also not under UN, right? It is also independent of UN. UN body नहीं है. ये तो कंफ्यूजन ना हो आईसीजे और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, इससे करा रहे हैं. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, राइट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड as a result of Hague peace conferences. Hague peace conferences in 1899. ठीक है. अब इसका पर्पस resolution of international disputes through arbitration and other peaceful means. अब arbitration underline करो, right? Arbitration means final. It is binding on both the parties, final and binding. Next लिखो, right? It is not a court. It is not a court as such, but a platform to resolve the disputes. It is not a court, but a platform to resolve the disputes right. Anyone can, yeah, right, any state, private body, international organization can access next. It deals with right. It deals with right. It deals with the disputes of various types. Deals with various type, including of commercial nature. Print out here.
commercial nature. Next लिखो, though it is not a part of UN, yet it is also a main platform for the disputes related to the arbitration of rules made by UN Citral. UNCITRAL. UN Citral. लिखो, right, what is UN Citral? Right. It makes trade rules. ठीक है, it is not like WTO, it's different, but it makes certain rules related to the trade among the member countries. Fine. You should not get confused with WTO. Okay, so rules like what type of standardized procedures, what type of disputes, which type of arbitration. So this is one UN body related to the commercial disputes basically, right? It's a UN body related to the formulation of laws, rules related to trade and commerce. ठीक है, right? So disputes requiring arbitration, in such rules are also handled अब लिखो, right, PCA, Permanent Court of Arbitration, has dealt with following disputes primarily. पहला, territorial and maritime boundaries. जैसे बांग्लादेश इंडिया, मैरीटाइम टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट था वो इससे सेटल किया गया. ठीक है, तो ये वाले लिए बहुत कोई भी जा सकता है, इट्स ओपन एंडेड डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट. सेकंड, disputes related to sovereignty, human rights, तो ये भी एक कोर्ट है, लेकिन आर्बिट्रेशन फिर दोनों पार्टी के एग्रीमेंट से ही होता है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, लेकिन रूट है ह्यूमन राइट्स. नेक्स्ट, इन्वेस्टर स्टेट्स डिस्प्यूट. सॉवरेनिटी मतलब टेरिटरी पे ही आएगा, टेरिटोरियली. नेक्स्ट क्या है, या सॉवरेनिटी जैसे आप उसको एक्सपैंड कर दें, कोई साइबर वॉर और हो गया, तो सॉवरेनिटी इंट्रूजन विदाउट परमिशन, तो नेचर ऑफ वॉर एंड violations will change from time to time. So just not land, it can be anything. ठीक है. Next है investor state disputes. Then
ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स, जैसे इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इंडिया की अंतरिक्ष एंड देवास जो था, that they will provide the satellite services, but later on there was some mismanagement of funds and some security issues, so government of India had cancelled the contract, so Devas took the government to permanent court of arbitration and we had to pay the compensation. तो इस तरीके के इन्वेस्टर्स डिस्प्यूट्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स में रोल है. नाउ राइट, इसका ऑर्गेनाइजेशन. सर क्रीक मैरीटाइम डिस्प्यूट ही है, हाँ, बिकॉज इट इज अ मार्शी लैंड. लेके कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें तो पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा नहीं एग्रीमेंट है कि वेयर आर वी गोइंग टू सॉल्व. तो सर क्रीक we want to solve all disputes on a bilateral basis. ट्रेडिंग एग्रीमेंट मतलब दो कंट्रीज ने कोई ट्रेड किया है एंड कंट्रीज आर नॉट फॉलोइंग द लॉज, तो यहां भी जा सकते हो. ये डिपेंड करता है तुमने अपने ट्रेडिंग एग्रीमेंट में क्या रखा है. अगर तुम WTO मेंबर हो, दूसरी पार्टी भी WTO मेंबर है, तो WTO में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जा सकते हो, ठीक है. तो इसका मैक्सिमम यूज कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में होता है, लेकिन यू कैन गो फॉर मैरीटाइम बाउंड्री सेटलमेंट एक्सेट्रा. अब चूंकि बांग्लादेश भी क्या है, कॉमनवेल्थ वाली कंट्री है, इसलिए हम ICJ में नहीं जा सकते थे, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रूट को अडॉप्ट किया. सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ऑर्गेनाइजेशन, राइट. इट हैज 3 पार्ट्स. फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, डैश करके लिखो. इट ओवरसीज इट्स budgets, its budget and general governance. अब इसको बहुत डिटेल की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट, which is also known as International Bureau. Right, it is headed by Secretary General, और इनका वर्क है लॉजिस्टिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट. नेक्स्ट, चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस. पार्टी इन डिस्प्यूट कब क्या, रजिस्ट्री टाइप, जैसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है उस टाइप से वर्क करते हैं. चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, किसी को अप्रोच करना है तो इस बॉडी को अप्रोच करेंगे, दे विल ऑर्गेनाइज द थिंग्स, लॉजिस्टिक्स एंड ऑल. एंड नेक्स्ट इज द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट. नहीं, थर्ड बॉडी, थर्ड है कोर्ट इटसेल्फ, उनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द कोर्ट. दे आर नॉट कॉल्ड एज जजेस, मेंबर्स ऑफ द कोर्ट. मेंबर्स ऑफ द कोर्ट. इंटरनेशनल जो सेक्रेटेरिएट है वो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. देखो 3 बॉडी है. पहला कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, ये बजट बनाना, जनरल काम देख रहे हैं. दूसरा है इंटरनेशनल ब्यूरो, यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल है,
सेक्रेटरी जनरल क्या कर रहा है अपने काम, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वैसे यहाँ पे तुम्हारा केस कब है, कहाँ है, लॉजिस्टिकल टेक्निकल सपोर्ट का काम और कम्युनिकेशन का काम, ठीक है। और थर्ड क्या है? यस, थर्ड जो कोर्ट कहते हो तो उसमें जजेस नहीं बोलते हैं, इनको मेंबर्स ऑफ कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, राइट, मेंबर्स ऑफ कोर्ट, ठीक है। सो अराउंड 225 arbitrators are enrolled at present. Are enrolled at present, ठीक है। अब लिखो राइट, राइट, इंडिया हैज यूज्ड the platform for the resolution of dispute with Bangladesh related to maritime boundary. Next, Kishan Ganga Dam भी, Kishan Ganga Dam related dispute went to Permanent Court of Arbitration. Right, the other high profile cases include Italian marine case, Italian Marines case, Enrica Legzi नाम था उसका, that cruise, and next Antariksh Devas, DEVAS, Antariksh Devas case. इटालियन मैरीन केस, लेकिन वो जो क्रूज या शिप था उसका नाम था एनरिका लेग्जी, तो उसमें इंडिया वाज इन्वॉल्व्ड एंड वी थॉट दिट इज द वे, EU हैज सजेस्टेड दिस इज द वे आउट, ठीक है। तो जस्ट यू शुड हैव एन इंफॉर्मेशन ऑन दिस। और मोस्टली सारे केसेस किशन गंगा को छोड़ के तो हमारे फेवर में नहीं रहे, ठीक है ना, अंतरिक्ष देवास, ना इटालियन मरीन और ना ही बांग्लादेश वाला। तो उसका मतलब है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन एंड द टाइप ऑफ प्रिपेयर्डनेस, द टाइप ऑफ एक्सपर्टीज वी डू नॉट हैव, तो नॉर्मली वी लूज द केस। एक और रीज़न है कि इंडिया और यूएसए में बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक इशू है, वेयर वी डू नॉट वांट arbitration of investors dispute by outside because we have always lost the case. We want that Supreme Court or domestic procedure should be utilized, but USA want that it should be done by the international bodies. In all these things, the hiring of lawyers to judges, everywhere a lot of money is involved, ठीक है। तो we are not that much in favor, but this is something, it is unavoidable as our investment and all these things will open up. So main thing is, instead of avoiding the international bodies, you should go with proper homework and preparation.
but it is good that India had adhered to the verdict in case of maritime dispute with Bangladesh. In comparison to that, if we see the example of China, so China had not adhered to the verdicts. USA, number of occasions, they have not adhered to the verdicts. China is still better than USA because at least China is a party to number of conventions. For example, UN Convention on the Laws of Seas. But USA is to not even party. USA is not a party to UN Convention on Laws of Seas. It is not a party to International Criminal Court. Fine, you have understood this? So now, when we are doing arbitration itself, so now just write a short note on UN Convention on the Laws of Seas, UNCLOS. On the laws of seas. Seas, SEAS, UN Convention on the Laws of Seas. तो ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है because of South China Sea issue. तो right, it is a UN treaty. Which has emerged out of the third UN conference on the laws of seas, which occurred between 1973 to 1982. 1973 to 1982. ठीक है? अब what is the objective? तो लॉ ऑफ सीज है, मतलब सीज से रिलेटेड एक तो नॉर्म्स डेवलप करना, किसको आप टेरिटोरियल वाटर बोलेंगे, किसको कोस्टल वाटर, किसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, प्लस कंट्रीज के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लस related to the rules, norms with respect to the exploitation of the marine resources. ठीक है? तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट लिखो, establish the rights and responsibilities of the nations with respect to the use of oceans. Oceans. ठीक है? अब सेकेंड पॉइंट लिखो, राइट. It also aims at the protection of environment and the management of marine resources. Marine resources. अब लिखो why it came. तो earlier it was just a law of sea and it was related to the territorial water. A country had some rights, but not beyond that. So what was happening was that
there was over exploitation of the marine resources. So some countries, they said that if the responsibilities and the rights are included, the extraction of the resources can be handled in a more sustainable manner. So this particular concept came where the rights of the countries have been increased so that जो एक pace of exploitation है या extraction है उसको reduce कर सकते हैं. इसीलिए इसमें environmental concerns और protection of marine resources add किया गया है. ठीक है. तो why? Because right, countries wanted, if rights are given beyond the territorial waters, comma, marine resources and environment can be better protected. Now write, as per UN Convention on Laws of Seas, so first comes territorial waters, 12 nautical miles. अब territorial waters में a country has complete, right? Country will have complete power and all laws will apply. Next, archipelagic waters. Archipelagic waters. Archipelago या archipelagic waters. मतलब जो outer most islands हैं, उनका भी, उनके around भी 12 nautical miles, right? A region of 12 nautical miles from outermost islands. Next, contiguous zone. Contiguous zone, right? You take 12 plus 12 nautical miles, additional 12 nautical miles. Territorial के बाद additional 12 nautical miles को contiguous zone. आर्कीपेलागिक जैसे अपने मान लो अंडमान एंड निकोबार है, तो आउटर मोस्ट आइलैंड्स, फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप, तो आइलैंड्स के अराउंड भी तो एरिया हमारा ही माना जाएगा ना, 12 नॉटिकल माइल्स. नेक्स्ट, कॉन्टिगुअस लिखा, राइट? नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? कॉन्टिगुअस वाटर इज लाइक फ्रॉम लैंड टू द बेस लाइन ऑफ द सी. लैंड से धीरे धीरे वो सैंड के फॉर्म में बनता जाता है ना, तो दैट लो लाइन टाइप का जो होता है उसको कॉन्टिगुअस बोलते हैं. तो यहाँ पर कंट्री के कोस्टल लॉज एंड सर्टेन लॉज अप्लाई. ठीक है, तो ये 12 एक्स्ट्रा हो गया, राइट? हियर स्टेट कैन इन्फोर्स
A state can enforce customs, taxation, immigration, or pollution related laws. Next is exclusive economic zone, EEZ. ये तो है up to 200 nautical miles. Actually contiguous zone को हम coastal zone भी बोल सकते हैं, right? Coastal zone. Contiguous zone नहीं है वो नीचे जाने वाला, वो है continental shelf. ठीक है, वो continental shelf को बोलते हैं, which I was telling. ठीक है, so next is continental shelf. Exclusive economic zone तो 200 nautical miles. Next, continental shelf. ये है this is basically sloping seabed. Sloping seabed. Sloping seabed. ठीक है, इसको बोलते हैं, जो हम पहले इसको बोल रहे थे contiguous. तो right, it may range from 200 to 350 nautical miles. Right, here country may have right to harvest. ठीक है, तो ये तो बस एक डिफरेंशिएशन है. Now you write India as well as China are members of, have been signatories to the convention. ठीक है, right? USA is not a signatory. So now ऐसे लिखो, dispute resolution mechanism under dispute resolution mechanism under UNCLOS. एक तो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज, ITLOS. Right, it is located at Hamburg, Germany. Next, look, parties can also use permanent court of arbitration or any other arbitration tribunal for example Philippines reached to
Permanent Court of Arbitration, PCA, against China. Next, countries can also approach to ICJ, International Court of Justice. Next, next लिखो, write the bodies which keep an oversight. Next paragraph. The bodies which keep an oversight include International Maritime Organization, कि ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, सीबेड अथॉरिटी. नेक्स्ट, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन. ठीक है, अब यहां पे लिखो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट एंड UNCLOS, UN Convention on Laws of Seas. सबसे पहले राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी. So if anything happens in South China Sea, does it matter to India? Why? Why it matters to India? What exactly China doing in South China Sea? China is doing two things. First, making claims, and second, building the islands, artificial islands. So if China is not stopped, what will happen? Yes. So it will become a territorial water. If it is a territorial water, or what will happen? It will become Chinese lake. So when it becomes territorial water, China can stop the entry of any vessel. ठीक है? So what is India's interest? South China Sea should remain to be treated as high seas. It should not become the territorial. एक तो territorial हो जाएगा, दूसरा exclusive economic zone हो जाएगा. अब यहाँ पर oil and gas भी है. अगर चाइना का exclusive economic zone होता है, तो we cannot go for exploration. Or as our trade with ASEAN countries is increasing, या our trade with Japan, China can prevent the access. China can prevent India's access, but India may not be able to prevent China's access in Indian Ocean. So India has to have a,
India has huge stakes. For that matter, USA also has stakes. But USA is not a party to UN Convention on Laws of Seas. India, China, both are the parties. Besides that, it is basically a dispute between China and its Southeast Asian neighbors. So ASEAN countries are also party to the dispute. The importance of sea has increased since 90s. Why? Because of globalization. So earlier neither we were trading so much, nor our energy requirements was so much. Or South China Sea, it's very important that Indian ships are present there, because Chinese ships are present in Indian Ocean. So we have to be there. इसीलिए जो मेन है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यूएसए की एशिया पिवट पॉलिसी, ये दोनों एम्ड किस पे हैं? टू चेक द एग्रेसिव मैरीटाइम बिहेवियर ऑफ चाइना. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस साउथ चाइना सी डिस्प्यूट. एक तो सिग्निफिकेंस लिखो साउथ चाइना सी. पहला तो वही है कि राइट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स has shifted to Asia Pacific oblique Indo-Pacific. अब लिखो Y सेंटर ऑफ ग्रेविटी. पहला, इकोनॉमिकली मोस्ट डायनेमिक रीजन. चाइना है, जापान है, कोरिया है, आसियान कंट्रीज हैं. ठीक है. नेक्स्ट, simultaneous rise of Asian powers. Historically one power is rising, but यहाँ पर बहुत सारे पावर्स साइमल्टेनियसली राइज कर रहे हैं. अब तक लोगों ने एक ही पावर का राइज देखा है, ब्रिटेन, यूएसए. तो अब यहाँ पे चाइना का भी राइज है, इंडिया का भी राइज है. वियतनाम हैज़ बिकम अ वेरी पावरफुल कंट्री, मिडिल इकोनॉमी में आ गया है वियतनाम. फिर जापान है, नॉर्थ कोरिया थोड़ा ऊपर है, बट है ये वाला जो रीजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है. ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज़ शिफ्टेड. Plus the conventional and non-conventional threats in the region. Conventional and non-conventional threats in the region. Non-conventional मतलब piracy, terrorism, extremism, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे सब वो भी एक रीज़न है. फिर वो सब गोल्डन ट्रायंगल वैंगल, ओपियम ट्रेड. तो नॉन कन्वेंशनल इश्यूज भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है. अब नेक्स्ट है, यूएसए हैज़ अ मेजर स्टेक इन द रीजन. ये रीजन हमेशा से यूएस की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट रहा है.
ठीक है, बिकॉज यहाँ पर रिसोर्स रिच स्टेट्स हैं, चीप लेबर है, तो यूएसए ने हमेशा इसका यहाँ से यू मेक द प्रोडक्ट्स और अटलांटिक में यू सेल द प्रोडक्ट्स इन यूरोप। तो यूएस के कॉमर्शियल इंटरेस्ट से मिडिल ईस्ट से भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मिडिल ईस्ट हैज़ व्हाट? ऑयल। मिडिल ईस्ट फॉर यूएसए इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑयल, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ क्रॉस रोड, इट कनेक्ट्स अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो उसका लोकेशन एज अ ट्रेड रूट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑयल। यूएसए हैज इनफ ऑयल एंड गैस, ठीक है। तो इट्स कॉमर्शियल, जो मिडिल ईस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएस हेजेमनी, मीन्स यूएसए's कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स। और वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट यूएसए के बाद कौन है? चाइना थोड़ी है, यूरोप। यूरोप में सेल होता है, ठीक है, और ये लोग तो सप्लायर्स हैं, चाइना, ठीक है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और यूएस हेजेमनी बनेगी कहाँ से? इकोनॉमी से। इकोनॉमी के रिटर्न्स कहाँ से आने हैं? इस पर्टिकुलर रीजन से। तो हमेशा कंटेनमेंट, यूएस फॉरेन पॉलिसी इज नोन एज पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। किसका कंटेनमेंट? राइजिंग पावर्स का, ठीक है। तो उधर चाहे रशिया हो, इधर चाइना हो, कंटेनमेंट। और यहाँ पर तो यूएसए इंश्योर्ड दैट इट विल रिमेन। यूएसए इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ वॉर फॉर 20 years विद वियतनाम। कॉमर्शियल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए। अब इंडिया के लिए इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट बट बिकम इम्पॉर्टेंट नाउ। इज दिस क्लियर? पहले हम ट्रेड रेट नहीं करते थे, वी वर इनवर्ड लुकिंग, सो दिस रीजन वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट नाउ इम्पॉर्टेंट। और इंडिया का जो सबसे मीनिंगफुल इकोनॉमिक रिलेशन है वो है आसियान से, ठीक है। आसियान इज द फर्स्ट कंट्री विद फर्स्ट रीजन with which we have free trade agreement, with which we have free trade agreement even in services. तो इंडिया के लिए this region has become important, it was not earlier so important, ठीक है। अब next को राइट, यूएस के लिए तो you have written it's very important, तो लिखो राइट, यूएसए is known as the resident power in the region. Resident power means it has military bases in the region. जैसे कौन सा है मिलिट्री बेस? हवाई। और ये गुआम है ना, पैसिफिक रीजन में, फीजी वीजी के पास, तो इट्स बेसिस। नेक्स्ट, यूएस इज इन सिक्योरिटी एग्रीमेंट नोन एज ट्रीटी एलाइज, यूएसए के ट्रीटी एलाइज विद जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, फिलीपींस, फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सबके साथ ट्रीटी एग्रीमेंट है। अब नेक्स्ट, this region was not so important for India. But has gained importance as the bilateral trade with the region is
region, मतलब region में भी with ASEAN alone, with ASEAन alone is reaching to 200 billion, 200 billion US dollars. With the region मतलब ASEAN के साथ our trade is reaching to 200 billion US dollars. ठीक है. आप लिखो what next लिखो significance of South China Sea. Only अभी तो रीजन का सिग्निफिकेंस लिखा था. सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी, राइट. A 3.37 trillion 3.37 trillion US dollar trade. 3.37 trillion US dollar trade has passed through the South China Sea in 2016. Next, 40% of the LNG trade, liquefied natural gas, 40% of the LNG trade has gone through it. Next, right, it is expected to possess a 17.7 billion tons of crude oil. ठीक है, right. Similarly, 190 to 500 trillion 190 to 500 trillion cubic feet of natural gas. ठीक है. अब next लिखो, right, it is called as the second Persian Gulf या second Persian Sea. Second Persian Sea. ठीक है. अब लिखो what are Chinese activities. Chinese activities यहाँ पर लिखो, right. At present it is a international water or a high sea. Right. However, China wants to convert it into the Chinese lake. Chinese lake. अब लिखो how. पहला, asserting claims on the islands. Second, building artificial islands. अब लिखो islands in dispute. तो इसमें जो सबसे डिस्प्यूटेड आइलैंड है वो है स्प्रैटले.
SPRATLY, स्प्रैटले आइलैंड, स्प्रैटले। और स्प्रैटले इन द सेंटर है, जैसे चाइना, उसके बाद वियतनाम, फिर इधर फिलीपींस, उधर जापान और इधर हांगकांग। इफ दिस इज वियतनाम, चाइना, तो ये जो बिल्कुल सेंटर में आइलैंड्स हैं ये है स्प्रैटले। ठीक है, अभी बता रहे, पहले स्प्रैटले लिखो, स्प्रैटले। और स्प्रैटले के ऊपर है पारासेल, पारासेल आइलैंड। ठीक है, और ये जैसे फिलीपींस आइलैंड के पास इसको बोलते हैं स्कारबोरो शोल, स्कारबोरो शोल। इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई। ठीक है, स्कारबोरो शोल, इसको लेकर के दे वेंट टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। फिर इधर ही ताइवान है। अब ताइवान और चाइना के पास है हैनान आइलैंड, हैनान आइलैंड, HAINAN, हैनान आइलैंड। फिर जापान तो आता है ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, तो जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में दे हैव अ डिस्प्यूट ओवर सेनकाकू, सेनकाकू आइलैंड। ये साउथ चाइना सी में नहीं है, ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, साउथ चाइना सी बस इतना ही है जहां पर चाइना और आसियान कंट्रीज हैं, और जापान वाला ईस्ट चाइना सी है। यूएस, चाइना हैज अ कॉन्फ्लिक्ट विद दिस आल्सो ऑन सेनकाकू आइलैंड। ठीक है, तो अब किसके किसके बीच में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है? एक तो वियतनाम, वियतनाम के साथ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इनका। बट टू इंडियाज कंसर्न, वियतनाम, चाइना, फिलीपींस एंड चाइना, इवन वियतनाम्स रिलेशंस आर इंप्रूविंग विद चाइना। ठीक है, तो ये ऐसे मेन आइलैंड समझ गए। अब चाइना का एक, चाइना के हिसाब से ऐसे करके इसको 9 लाइन बोलते हैं। ये चाइना ने सबमिट किया है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, और इसका जो शेप है इज लाइक अ काउ टंग। ठीक है, तो इसको काउ टंग भी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी बैड डायग्राम, यू कैन आस्क ऋषिकेश सर टू मेक। ठीक है, तो ये 9 लाइन या काउ टंग फॉर्म में है। ठीक है, अब चाइना के हिसाब से ये चाइनीज टेरिटरी है। अब अगर ये चाइना की टेरिटरी है तो टेरिटोरियल और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तब सब चाइना का है। ठीक है, ये भी चाइना का है, ये भी चाइना का है, सब चाइना का है। अब चाइना, मान लो कोई शिप है, फ्रॉम वेयर दैट शिप विल गो, तो चाइना विल नॉट ओनली डिनाई explorations, China will even stop and can interdict any ship. ठीक है, because it will get converted into territorial water. उसके बाद यहाँ भी बना लेंगे, यहाँ का EEZ archipelagic water, यहाँ का सब जगह, मतलब चाइना की शिप निकल जाए बहुत है।
You are understanding this? यार ship ही नहीं निकलने दे रहे. They want to convert it into a international, into a Chinese lake. ठीक है? तो अब किसका किसका मेन डिस्प्यूट है? सबका ही है ऐसे तो. ब्रूनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सारे आसियान कंट्रीज. बट सबसे मेन डिस्प्यूट जो है, हॉट टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, दिस इज विथ फिलीपींस एंड वियतनाम. अब जो आसियान रीजन है या आसियान, these 10 countries, इसमें म्यांमार फिर भी it is inclined towards China only. Next, कंबोडिया. कंबोडिया हमेशा फिर चाइना के साथ रहता है. ठीक है. फिलहाल के लिए फिलीपींस है तो यूएस एलाई, बट इट इज नाउ very close to China. Vietnam also improving its relations. अब इंडोनेशिया है. Indonesia is a non-aligned country, but non-aligned is a type of opportunism. Whosoever can give a better deal, they can shift, though India is trying to improve. Malaysia. Malaysia is also anti-US country. It may not be very pro-China, but it is very anti-US country. Brunei, small, इतना important नहीं. ठीक है. तो चाइना का influence, first of all, Chinese diaspora, China's influence is there. Then both way, either by checkbook diplomacy or by showing threat, China is able to influence them. Vietnam initially was very much pro-India. Vietnam invited India for exploration of oil and gas, but against China's attitude, India had come out of the exploration. So this has been a reason of disappointment for Vietnam. So अब Vietnam is playing game with all. Vietnam is also having close relations with India, and we will be exporting a shorter version of BrahMos to Vietnam, and we have defense partnership with Vietnam. Vietnam and USA had fought, but they have entered into strategic partnership also, plus improving its relations. So every country is going for hedging as well as balancing against the rising China. ठीक है. तो what has happened previously? China was very aggressive, but when China was aggressive, the neighbors got alienated, went closer to USA and India. So China has changed the approach, because right now what is more important for China is how to manage USA, its trade wars, the way USA is attacking at Chinese economy. तो इस समय China has a sense that it does not annoy its neighbors, be it India, be it ASEAN countries. So, and when Trump is appearing to be destroying the international order, China wants to show that it is a good guy, somebody who is ready to take the responsibility of globalization, as the speeches by Xi Jinping. Okay, so but the reality is
Who is a destroyer of globalization? China, not USA. It is the China that has been following unfair trade practices. ठीक है? So China has been protectionist and USA is left with no other measures but to take these extreme measures. So China at World Economic Forum is projecting as itself as a savior of globalization. But China is actually the real culprit. ठीक है? तो फिलहाल Chinese, so what is happening at this time? In 2016, when Permanent Court of Arbitration, they have given a verdict against China. China said no. We do not accept any such arbitration or UN Convention of Laws of Seas in territorial disputes. But because the environment is changing, China has agreed with ASEAN countries that they will evolve a code of conduct for the countries so that peace is not disturbed in the region. So, abhi what is going on? The process for evolution of the code of conduct for the countries between China and ASEAN. Okay? And recently what had happened? China and US relations have become more tensed. Why? Because China has interdicted US ships, including US drone also. Plus, China has deployed Sukhoi 35 on different islands, and every artificial island China is making it as a base. Against that, Trump has announced that it will seriously implement the freedom of navigation of high seas policy. But the question is, USA also cannot take the legal route because USA is not a party. Okay? So there is a possibility of huge conflict or conflict on South China Sea. So there are many scholars who write that the future conflict will emerge from South China Sea. Now, South China Sea links Indian Ocean at what? Near Andaman and Nicobar, ठीक है, और मलाक्का स्ट्रेट. तो अब क्या हो गया? ओशंस अलग नहीं रहे, ओशंस सेम हो गए, और इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इनटू दैट. ठीक है? यू हैव अंडरस्टूड द स्प्रैटले आइलैंड, दिस पर्टिकुलर इशू. और नॉर्मली स्कारबोरो चूंकि फिलीपींस के पास है तो उनसे, वरना सब पार्टीज इन्वॉल्व ही हैं, इट्स अ जॉइंट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है? तो हियर व्हाट यू कैन राइट दैट parties, right, China and Southeast Asian countries make overlapping claims. Make overlapping claims. Right, next. China has presented its claim which is known as 9-dash line. Right, it is also called as cow tongue. Cow tongue. ठीक है? Because of the shape. Right. Thus, China claims all the islands as Chinese territories.
right? Once they become Chinese territorial waters, it can prevent the movement of ships of other countries. अब लिखो, what is the context of the conflict? इसमें point number 1, trade war between USA and China. ठीक है, अब सेकेंड थिंग क्या लिखो, राइट? चाइना हैज बेनिफिटेड बाय ग्लोबलाइजेशन. चाइना तो बेनिफिट हो गया ग्लोबलाइजेशन से. अब चाइना, बट इंटरनली इन चाइना people are not happy with the rule of Chinese Communist Party, or especially after Arab Spring in Middle East. ठीक है, तो वहाँ पे हांगकांग मूवमेंट भी हो गया. तो यहाँ पर बहुत बड़ा थ्रेट है. चाइना का मेन मोटिवेशन क्या है? चाइना का मेन मोटिवेशन है चाइनीज पब्लिक को ये दिखाना कि नेबर्स में टेक योर टेरिटरी विद द हेल्प ऑफ यूएसए. और चाइना के जो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स, दे वांट टू थ्रो द अटेंशन फ्रॉम और शिफ्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स टू दिस पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, तो चाइना एंड यूएसए बेसिकली, it is a conflict of China and USA, and USA has been pressurizing China that China should mend its ways, but China has not been doing so. Okay, so what USA has done? USA has responded with its Asia pivot policy. Asia pivot policy is to contain the rise of China, to ensure that rise of China remains peaceful. तो rise of China remains peaceful के लिए क्या चाहिए? Containment and engagement. तो what USA has been doing? USA has started entering into the strategic partnerships with Chinese neighbors, including Vietnam and India, Japan. So strategic partnerships. So now China plus USA imposing the duties on Chinese products, USA going for protectionist policies. It has not started under Donald Trump. It was there under Obama itself. Is that clear? So what, and actually the global financial crisis of 2008 is a well planned event, planned by USA, because if you do not do this global financial crisis, you cannot check the rise of China. तो चाइना का राइज चेक करना, क्योंकि चाइना तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता चला जाएगा. ठीक है, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, चाइना का एक मार्केट यूएसए है, दूसरा मार्केट यूरोप है. ठीक है, तो यूरोप को भी डिस्टेबलाइज करना इज इंपॉर्टेंट. अब यूरोपियन शुड नॉट हैव मनी टू बाय द चाइनीज प्रोडक्ट्स. सेकेंड, अब यूरोप को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन यूरोपियन यूनियन, व्हाट इज यूएसए's biggest strength? Britain.
ठीक है. सो सारी जितने इश्यूज हैं सब इंटरलिंक्ड इश्यूज हैं, एंड दैट इज ऑल यूएसए's well planned policies. Okay, main is what USA wants to maintain. So USA's foreign policy, two basic principles. USA is very securely placed. Okay, USA's real strength come from its secure location. ठीक है, nobody can go there and fight, and where they will stay for how long. Okay, so USA's aim is to maintain the security and well-being of its people. Okay, well-being मतलब ट्रेड से मैक्सिमम बेनिफिट यूएस को होना चाहिए, ग्लोबल ट्रेड से. फॉर दैट USA needs two things. First, control over trade routes. ठीक है, and which is the main trade route? Oceans. So control over oceans. Oceans को you have to control. And that is why USA has a blue water navy. Okay, control the trade routes means control oceans. Second क्या है, USA has to check the rise of any regional hegemon. To check the rise of any regional hegemon, USA can keep this hegemon in fight with the neighbors. Fine. Now, after the like there are few countries which can challenge US hegemony. ठीक है. So there are some laws of international politics, जिसको बोलते हैं laws of geopolitics. और US foreign policy is based on geopolitics. Fine. तो एक तो इनकी पॉलिसी ये है, that was given by Alfred T. Mahan, that if you will control oceans, you can control the world. Second is, if ever a potential hegemon can emerge, it will emerge from, और बेसिकली एक एल्फ्रेड टी महान एक जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं, इनके हिसाब से वर्ल्ड विल बी अंडर अ सी पावर. लेकिन उसके बाद निकोलस स्पाइकमैन, ठीक है, इनके हिसाब से अल्टीमेटली वर्ल्ड विल बी अंडर द कॉन्टिनेंटल पावर. कॉन्टिनेंटल तो यूएसए तो आइलैंड है, और कॉन्टिनेंटल पावर मतलब यूरोप में. तो वर्ल्ड, आइलैंड, कॉन्टिनेंटल पावर, इनकी थ्योरी क्या है कि वन विच कैन कंट्रोल यूरेशिया,
will control the world because of the location of resources. So two countries. Western Europe can also be a challenge, but Russia and China और यूरेशिया का भी हार्ट है सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया का लोकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे है अफगानिस्तान। तो इनको यहाँ पे तो रहना ही रहना है. They'll never leave. They will find the reason to stay here to prevent the rise. रशिया का भी राइज कैसे रोक सकते हो? टेररिज्म. चाइना का भी रोक सकते हो? टेररिज्म. ठीक है, तो रशिया को इनके नेबर्स के साथ लड़ा सकते हो. ठीक है. अब वेस्ट यूरोप में कुछ कंट्रीज होंगे जैसे जर्मनी एंड ऑल विच वांट गुड रिलेशंस विद रशिया. तो दैट्स व्हाई ट्रम्प इज सो एंग्री विद जर्मनी. जो इंटायर यूरोपियन यूनियन, इट इज नॉट यूरोप्स प्रोजेक्ट. हुज प्रोजेक्ट? यूएस प्रोजेक्ट. यूएस प्रोजेक्ट टू कंटेन द rise of or to contain Russia as well as Europe. And whenever EU expands, it is according to USA. Okay, so EU, initially USA thought EU will not go out of its influence, but EU started challenging US hegemony. EU recovered. So USA had brought Britain into EU. Why? Not for the smooth evolution of EU, but to put brakes on EU. Whenever EU takes any such decision which may go against the trading interest of USA, USA can use Britain. Britain will stop the process. फाइन. तो अभी भी अब ब्रेक्सिट मीन्स क्रेडिबिलिटी ऑफ EU also goes the project of EU. अब USA also wanted the other country Turkey in EU because Turkey also has been US satellite. Germany never wanted Turkey. ठीक है, because Turkey will again be the second spoiler in USA. And Europe, actually what he says, Europe unnecessary, there is a tension between Europe and Russia. Europe has to pay for NATO forces. USA says you are taking the benefits. It is giving exactly opposite arguments. It's American hegemony which European countries are financing. Fine. So at NATO, Trump's position, this summit was against Germany and he went even out of the protocol. Fine. So now China and USA, the leading trading partners, and USA has to reduce its dependence on China. So China has to increase its dependence on EU and other alternative markets of Middle East. So China should not be able to sell. That is why in the Middle East there has to be disturbances. और मिडिल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंसेस ये कर रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट यूरोप पे है. इट इज लाइक विथ सिंगल शॉट you are killing 5-6 birds at the same time. Fine.
And this global financial crisis started in USA, impacted EU. EU में Greece came under the sovereign debt, ठीक है. Greece went to IMF. USA will not let IMF give money. ऐसे तो देंगे नहीं, बेल आउट नहीं करने देंगे, ठीक है. अब यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा तो ग्रीस वाले जर्मनी से लेंगे. अब जर्मनी वाले नाराज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल एंड EU एज अ प्रोजेक्ट, फाइन. और एंड नहीं भी कर रहे हो तो डिस्टर्ब, सो दैट यू कैन अफेक्ट द चाइनीज कॉमर्शियल इंटरेस्ट, ठीक है. तो अब क्या ये राइजिंग चाइना, द एंटायर पॉलिसी ऑफ USA इज टू प्रिवेंट. इतना तमाशा होता ही नहीं. हैड चाइना फॉलोड द प्रॉपर liberalization, it is all because of China that it is happening. तो अब China as the market here is slowing down, यूरोप का मार्केट स्लो डाउन है तो चाइनीज इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, जिसको पेपर्स में बोलते हैं चाइनाज न्यू नॉर्मल. अब चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, देन द चाइनीज पीपल विल बी एंग्री. देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. The Communist Party of China did what? Two things. एक तो you have to maintain the strict control over the party. Country has been changed into authoritarian because China has an example of USSR. Reform करा तो it will collapse. तो totalitarianism they will increase their strong control. अब control increase करेंगे तो लोग तो पूछेंगे ना क्यों, because China is under threat. कौन सा threat? US and other neighbors. समझ लो इंडिया की इतनी हिम्मत हो गई, डोकलाम पहुंच गए. You understand what message the leaders in China will be giving their public? Okay, so Chinese leader, present leader, what he talks about? To end the 2 centuries of humiliation, or he talks about China dream. China dream क्या है कि चाइना वालों का जो ह्यूमिलिएशन हुआ है 200 सेंचुरीज, उसको खत्म करना है. और किसी भी कंट्री के लोगों के लिए ह्यूमिलिएशन है इफ देयर टेरिटरी इज अंडर द फॉरेन कंट्रोल. तो चाइना की टेरिटरी, एक तो ताइवान, वो तो है ही डी फैक्टो यूएस कंट्रोल में, प्लस चाइना नीड्स कि its own people's emotions, they should rise more and more. So China will say this is our land they have taken, this is our land they have taken. That time they have taken because we were weak, but now we are strong enough. So it's to its public it has to show that it is tough and it is taking the tough stand. But when it takes the tough stand, then the neighbors go near to USA. So now USA and Vietnam, which is a bigger threat, USA. So what China will do? China will enter into an agreement. For the time being, let us resolve it peacefully. So there is a change in the Chinese attitude, not only towards Vietnam, Philippines, but also towards Japan, towards Korea, South Korea.
ठीक है, तो दिस गेम इज गोइंग ऑन इन साउथ चाइना सी, और इंडिया जो है बड़ा कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि इंडिया को खुद नहीं पता था कि चाइना वाले डोकलाम से इतनी आसानी से हट जाएंगे। हमने तो ऐसे सोचा नहीं था, ठीक है, हमें लगा था कि वॉर ही होने वाली है, हो सकती है, बट अड़ गए कि भाई देखते हैं, ठीक है। तो अब इंडिया गोइंग विथ यूएसए, गोइंग विथ चाइना, बट बिटवीन दीज टू it makes sense if you go near to USA, because from China on its side does not do anything concrete which is in our interest, not even recognizing Hafiz Saeed and others as international terrorists. Then CPEC corridor, and most troublesome thing is the imbalance which we have in trade, without which Wuhan, कुछ नहीं, that's all useless. अभी फिर क्या है, India is doing all these things because countries go for balancing act. So India is going because Trump's trade policies, they may also put India under pressure. So we are just showing this. Fine, but this is like happening. तो अब साउथ चाइना सी फिलहाल क्या हुआ है, ट्रम्प हैज अनाउंस दैट ही विल एक्टिवली गो फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पॉलिसीज, तो पीपल आर लाफिंग, व्हाई, बिकॉज यूएसए हैज नॉट साइंड यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, तुमने साइन भी नहीं किया, फ्रीडम भी चाहिए, ठीक है, तो किस बेसिस पे, फाइन। अब यूएस को कौन मिल जाएगा, इंडिया और आसियान, क्योंकि ये दोनों लोगों ने साइन करके रखा है, ठीक है, फिलहाल आसियान ही मेन है, फाइन, इन साउथ चाइना सी। यू हैव अंडरस्टूड सम पॉलिटिक्स। हाँ, चाइना के लीडर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर में रहना, कम्युनिस्ट पार्टी, और खुद को पावर में रखना, और खुद को पावर में रखना और कमाना। कमाना कैसे, यूएसए से ट्रेड करके। अब इनके इतनी बुद्धि नहीं है कि इतना मत कमाओ, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करो। सब फासिज्म ही है, ठीक है, तो कहाँ कुछ कुछ पहुंचे तुम लोग, कहाँ तक लिख लिया स्टोरी, हाँ? What is the context of South China Sea dispute? China has benefited by the globalization, full stop, right? लिखो right. अब next है, China is not giving USA the concessions which it wanted. तो चाइना और यूएसए के बीच में मैक्सिमम ट्रेड डिस्प्यूट्स रहे हैं, और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ डब्ल्यूटीओ का मैक्सिमम यूज इसी के लिए हुआ है। अब जब डब्ल्यूटीओ के थ्रू नहीं हो रहा है, तो यूएसए इज नॉट रॉन्ग इन कमिंग आउट ऑफ डब्ल्यूटीओ, क्या करेंगे वो लोग उससे, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो राइट, राइट, हेंस यूएसए वांट्स टू चेक द राइज ऑफ चाइना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो राइट, US policies led to the slowdown in
the global economic growth, instability in Middle East, and European Union. Next लिखो, it has reduced the rate of economic growth in China. Known as China's new normal. Next, legitimacy of Communist Party of China. Legitimacy of the Communist Party of China. Depends upon its ability to maintain its rate of growth. तो मेन चीज वही है, खाओ और खाने दो। अकेले खाने वाला प्रोग्राम ठीक नहीं है। इसी चक्कर में शरीफ चले गए। अगर शरीफ ने आर्मी को के साथ मिल के करते, खाओ और खाने दो, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये चाइना के जो लीडर्स का इतना ज्यादा एम्बिशन हो गया, ठीक है, कि अकेले ही खाएंगे, इन द सेंस यूएस वालों को नहीं खाने देंगे, वो नहीं हो पाएगा। और हमेशा वॉर्स जो है वो ट्रेड के लिए ही हुई हैं, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, राइट ऑन वन हैंड चाइना हैज स्ट्रेंथेंड द पार्टी, Communist Party, and the position of the president, comma, on the other hand China aims to divert the attention of the people towards external threats. Next, Chinese president talks about China dream. जैसे मोदी जी ने बोला था ना, अच्छे दिन सपने, वही चाइना ड्रीम क्या है कुछ पता नहीं, चाइना वाले सोच रहे कोई ड्रीम है, राइट। he promises to end the 200 years of humiliation, of national humiliation. अब लिखो, it is humiliation that Chinese territories are under foreign occupation. Next, hence China took aggressive stand on island issues. Next, aggressive stand on island issues
alienated Chinese neighbors. Alienated Chinese neighbors. Next, USA has increased the stakes in the war. Stakes in the war. Chinese stakes in the war. ठीक है. अब hence China is trying to improve relations with the neighbors, show itself as a responsible member and project USA as the destroyer of the liberal world order. Liberal world order, destroyer. Next. Recently, China has attempted to improve relations even with India. Next, signed cooperation pact with Vietnam. Cooperation pact with Vietnam. Right, Chinese president has visited Vietnam. Agreed to avoid the conflicts and increase Vietnamese exports to China. Okay, next, similarly offered, right, lot of aid to Philippines. Aid to the Philippines. अब next लिखो, right, at the same time China has increased its military activities in South China Sea, Indian Ocean, ठीक है, and मतलब military activities increase करें. देखो, right, USA on one hand is increasing the trade war on the other hand USA has asserted that it will step up its military activities and naval presence in the region. Right, Trump has
that USA will pursue FONOPS. FONOPS. This is known as freedom of navigation operations. Freedom of navigation operations. Okay, look, right. USA asserts freedom of navigation without being a member, comma, China is a member, मतलब member मतलब UNCLOS, but does not follow, it does not follow. ठीक है, अब present status, ASEAN and China are negotiating right code of conduct for South China Sea and have adopted a negotiating framework on it. Negotiating framework on it. ठीक है, चलो, we'll see further. Tomorrow is, I think, current affairs class.